Hello everyone, I hope you all are doing good. So I'm here with another video. Today we have Unnati Chhabra with us. She is working as an SD at Zomato. So we'll be interacting with her to get about the interview experience and preparation strategy for Zomato. Let's begin. Hi. Hi Unnati. Hello, welcome to the YouTube channel. Hi, Mank. How are you? I'm fine. What about you? I'm good too. First of all, So congratulations on joining Zomato. thank you so much. I Thank hope you. everything is fine at your end as well. Everything is fine. So let's begin. So first of all, give a short introduction about yourself. Yeah, so I am Unnati. I am an SD at Zomato, recently joined through Hack A Noodle. And previously I was a development engineer at Asset Mentor. So it's a layer option for NFT creators and mentors. And previously I went on a different positions as a April, so you can say this is my first tech job as an SG, and really glad to be here. And yeah, looking forward. Okay. So Unnati, this was an off-campus offer or was it on campus? No, this was an off-campus offer. I got it through a hackathon. It was a direct offer from that only. Okay. So hackathon, कितने rounds थे hackathon में? Yeah, so like we had a 24 hours ka hackathon in which we have to submit the idea, we have to submit the prototype, and we have to build that product. So it was around the problem statement was around to build the next unicorn of India. So basically, I cannot reveal that idea since I had signed an NDA with Zomato. So like we had built that product, and like that was more around accessibility for differently able people, more around making them comfortable while shopping. So yeah, that was an idea, and like really glad to be here at Zomato through the hackathon, and the team is amazing. So there was the first round was around the idea submission, and then there was a pitching round in which we have to we have to explain our idea. Then we have to submit a UX UI of the website, and then the last one was around the product building and how the product has been built, which tech stacks did you use, and all that stuff. So in total, the 3 rounds. Okay. So how did you get to know about the opportunity via through which platform? Yeah. So first of all, it was so my friend she got registered through Unstop, which is again a great platform for hackathons to get to know about hackathons and quizzes. And then she like intimated me कि चल यही करते हैं अच्छा opportunity है. So we did it, and we were about like we were four in number, so we had four team members, and that's how the thing was around. Yeah. So rounds were online or offline? So it was an offline hybrid, not hybrid. It was an in-person hackathon in the Zomato office itself. So we were in the Zomato office for 2 days. Okay. So Yeah. rounds, like every round was an elimination round? No, there was no elimination, but you have to like submit the product. And I remember some of the teams got demotivated while building the product, so they just left the hackathon in between, and that's how they got disqualified. But eventually, it wasn't eliminatory round. If your website is being built, even if your website or a product is not being built, so that was not an issue at all. They were very supportive, and the whole team members, including the CTO and the CEO, were in the judging, and they were all around through the floor, and they were very supportive through that. In that case, like they were
We were getting the free food for 2 days, like fully facilities for Wi-Fi and all that stuff. So yeah, it was amazing. So as you mentioned, it was a team-based hackathon, right? Yeah. Okay. So anything like which you want to expand regarding the idea, prototype which you build, and anything Yeah, like. so basically, we were like we were four in number. So I was the final year of like you already know that I'm final year like doing final year BTech from Nigeria to W, and like there was a fellow mate who was from Triple ITD. He was again in fourth year, and two of them were working professionals, already working professionals. So they some like one of them had the 4 months of experience working as an SD at Policy Bazaar, and one had 1 year of experience at working at Athena School. So it's a startup. But we had divided the task like pretty much. My main task was around research and front end, while as there was another team member who built the back end of the website and integrated that with the front end. Then there was a second person who built the UX UI for the website. So it was around more around how can you make people shopping experience of differently abled people, like people who are not having that capability of buying shoes day to day on day to day basis. So it was a kind of a Nika for those people, wherein they can find every customer shoes on their go. And yeah, that's that was a simple idea, you can say. And like it was an amazing idea, and the people literally loved it because again it had a great business model, since shoes to day basis पे use होती हैं, whether it is for differently abled people, whether it is for normal people. So वो तो use होती ही है normal basis पे. So like even when I see, like I'm also a differently able person, so I find a lot of difficulties while buying shoes for me. So like जब भी हम जाते हैं मार्केट में, तुमको आराम से शूज मिल जाते हैं, राइट? बट फॉर मी इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो लाइक बेसिकली मेरा अपना आइडिया था, and that idea was loved by CTOs and CEOs because they could relate कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, क्योंकि वेंडर्स ही कम है हमारे पास. बिकॉज जो शूज हम पहनते हैं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स. आई हैव हाईएस्ट सोल्ड शूज, मोटे शूज होते हैं विच इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, and some are rod based as well, so I wear these kind of shoes. So वो प्रॉब्लम बहुत हो रही थी मेरे को, जस्ट टू हैव अ वन स्टॉप सोल्यूशन कि हाँ भी एक जगह मेरे को सब चीज़ें मिल जाए. और मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम फेस होती है मेरे शूज़ बाय बाय करने पे. सो हाँ वही चीज़ है. एंड लाइक इवेंचुअली द बिजनेस मॉडल इज ग्रेट बिकॉज अगेन एज आई सेड कि शूज़ तो डे टू डे बेसिस पे यूज होते हैं. And yeah, we had the community feature wherein the people can interact with the fellow PWD candidates. Yeah, even if they want to have the doctor का prescription, so we had the option for that as well, कि डॉक्टर्स को कैसे आप रीच आउट कर सकते हो या हॉस्पिटल्स को फॉर द प्रिस्क्रिप्शन कि कैसा शूज आपको बनवाना चाहिए. देन वी हैड द कस्टमाइजेशंस के साइजेस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कलर पे डिफरेंशिएट, बिकॉज अभी जितने कलर्स हैं दैट इज ओनली ब्लैक एंड वाइट. बट वी डोंट वांट कि ब्लैक एंड वाइट ही हो. वी वांट डिफरेंट कलर्स, जैसे हमारे स्नीकर्स होते हैं, राइट? वी हैड रेड, वी हैड येलो, देन ग्रीन, अलग अलग कलर्स के आता है शूज. So yeah, that was a certain of the customizations that we focused upon. Then we had certain filters. मान लो कि किसी को cerebral palsy है, which kind of shoes she or he should wear while walking. या किसी को मान लो paralysis है, which kind of shoes he or she should wear. Again, it was for the social cause. So I guess that was a plus idea for like plus point for us कि हम social good के लिए एक proper एक solution बना रहे हैं, and that too with the great business model.
So again, Zomato is a great unicorn. So they were more around कि business model कैसा तुम्हारा हो रहा है तो वही पैसे वाली बात आ गई. सो इट वाज़ अ ग्रेट आइडिया, आई लव्ड द आइडिया उन्नति। सो हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली इसके बारे में, बट हमने हैकाथॉन के बारे में बात ही नहीं की, तो हैकाथॉन का क्या नेम था? इसके बारे में थोड़ी इन्फो दोगे? Yeah, sure. The name of the hackathon was Hack A Noodle by Zomato. So it is conducted every year in this time only, means December, November, December के बीच में होता है. Like it is conducted regularly, and if you win this hackathon or in the top three, right? Top three runner-ups में आते हैं. So you get the direct offer from Zomato. We also already got. So it was like for the first person, the prize was around 1 lakh. Plus, you were also allowed, like you were also awarded with 4 MacBook Airs, not Airs. It was, I guess, iPads, right? Then the second runner-up was getting 75,000, right? Second winner, plus AirPods from Apple. And the third person was getting around 50,000, right? And the Sony ke headphones and all. Along with that, you are also already getting all 12 people, which means all one team, which with 4 members, was getting the offers for internships and full time, right? And like it was considering 2 rounds of interviews, 2 rounds basically, not the interviews. The first round was DST based coding round, which was allowed to give only by the team leader. means जिसने रजिस्टर करा होगा टीम को for the hackathon, he or she is allowed to give the coding test. And once you qualify that, तो आपको second round के लिए बुलाएंगे, in which you have to build the idea that I already mentioned. So in my team, the coding round was given by the team leader Soumya. Like she's also an SD at Zomato with me only, and my team only. So like she gave the first round of this hackathon, and then the second round was keep proper team formation, and then you have to take part in hackathon. ओके। सो क्या कहते हैं, बीटेक, एमसीए, बीसीए ग्रेजुएट्स भी इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं हैकाथॉन में? Yeah, anyone can take part in this hackathon if you are in college itself. Means not even the pass outs can also take part, because I remember that my team में से 2 people were working professionals. So ओके, like even if you are a working professional, if you want to switch from your current company, you can still take part in this hackathon. ओके। सो एज़ यू मेंशन उन्नति, देयर वाज़ अ डीएसए बेस्ड राउंड व्हिच वाज़ गिवन बाय द टीम लीडर, राइट? Hmm. सो Yeah. डीएसए अगर आपने डिस्कस किया हो सौम्या के साथ, तो डीएसए राउंड कितना टफ था? क्या मतलब क्वेश्चंस का पैटर्न था? Yeah. आइडिया हो? So like yeah, मैं बता देती हूँ. So it was around lead code medium hard, because Zomato में ज़्यादा hard पूछते नहीं है. Not around CPU or competitive programming नहीं पूछते. And lead code medium hard, array strings, graphs, DP, these kind of topics you can revise and give the test. I guess that's very easy because Zomato ज़्यादा high level पूछता नहीं है. Even if you apply it through a referral on Zomato, so there are 2 rounds of interviews in that as well. Like एक proper DSA round होगा, and one will be the project implementation round. सो उसमें भी लाइक नॉर्मल डे से ही पूछते हैं आपसे. एंड आपकी एक चीज़ में चांदी हो जाती है कि अगर आपका सीटीओ इंटरव्यू ले रहा है तो वो डे से पूछता ही नहीं है आपसे. वो सिंपल आपका प्रोजेक्ट्स पूछता है, एंड इम्प्लीमेंटेशन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पूछता है, एंड कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आपको देता है. तो हाँ, ये चीज़ है. ओके। सो उन्नति, जैसे आपने हैकाथॉन से जॉब क्रैक किया, सो तो हैकाथॉन की बिल्डअप की टीम की बिल्डअप के टाइम पे क्या ध्यान रखा था कि लाइक यू चोज़ पीपल इन द टीम फ्रॉम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस,
तो किस चीज़ के रिगार्डिंग आपने मेन फोकस किया था, तो लाइक यू मेक दैट थ्रू द ऑफर? देखो यार, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है? जब भी आप टीम फॉर्मेशन करते हो हैकाथॉन की, यू नीड टू फाइनलाइज योर टीम मेंबर्स वेरी केयरफुली, बिकॉज ऐसा हो जाता है कि काफ़ी लोग होते हैं कि वो पार्ट ले लेते हैं हैकाथॉन में, एंड देन दे आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट ड्यू टू सर्टेन रीजंस। अगर हमारे टाइम पे अगर ऐसा होता, अगर लाइक फॉर एग्जांपल कोई अगर लाइक बच्चा या जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे साथ, वो अगर मना कर देता, तो वी वुड हैव लॉस्ट दिस हैकाथॉन एनी हाउ, बिकॉज टीम तो रजिस्टर 4 की हुई थी, एंड अगर उसमें से एक बंदा लीव कर गया तो ऑब्वियसली दैट क्रिएट्स नेगेटिव इम्पैक्ट एंड मे बी द केस दैट वी माइट आल्सो डिस्क्वालीफाई, राइट? सो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि लोगों से पूछ लो पहले कि इफ़ यू वांट टू रियली टेक पार्ट इन दिस हैकाथॉन, या कोई भी हैकाथॉन में आप लेते हो, बिकॉज अगेन यू हैव टू गिव टाइम टू इट एंड you have to devote, right? You have to push yourself कि भाई हाँ भाई हैकाथॉन में जाना है। मेरा सब ये मोटिवेशन था कि मेरे को ये पता था कि इस हैकाथॉन से सीधा डायरेक्ट जॉब ऑफर है। So I was putting like कि हाँ भाई मेरे को Zomato में जाना है, anyhow I have to take part in this hackathon, and obviously आपके लाइक आपके टीम में सभी लोग होने चाहिए, सभी टेक स्टैक्स पता होना चाहिए, सभी तो नहीं पता होते, बट नॉर्मली जो हर एक हैकाथॉन में यूज केस होता है, जैसे यूएक्स यूआई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज उसी के बेसिस पे कई बार हैकाथॉन जज होते हैं, राइट? सो मे बी यूएक्स डिजाइनर, एक अच्छा डिजाइनर होना चाहिए आपके पास, देन यू शुड हैव अ प्रॉपर बैकएंड का पर्सन, मीन्स जो प्रॉपर बैकएंड इंटीग्रेट कर पाए, बिकॉज बैकएंड कनेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट if you know, and then front end is common, like front end तो सबको आती है, that is not an issue, वो तो मिल जाते हैं। अगर if you want to integrate, मान लो कि तुमको एक प्रोजेक्ट बनाना which requires both integration of ML AI to front end, तो आपका एक होना चाहिए पार्टिसिपेंट जो ML AI में गुड अच्छा है, राइट? सो यही चीज़ें हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड या ओके, सो जैसे तुमने वहाँ पे ऑफलाइन हैकेथॉन में टीम मैनेजमेंट कैसे था, मतलब लाइक हाउ डिड यू स्ट्राइक दैट मैनेजमेंट देयर? या सो मैं अपना सीन बता देती हूँ। तो ऑन द डे ऑफ हैकाथॉन, जब हैकाथॉन था, मेरा ऐसा हो गया था कि मैं नहीं जा रही। मैंने एक्चुअली मैं अपने एक टीम मेंबर को मना कर दिया था कि आई एम नॉट कमिंग। बट उसने मेरे को परसुएड करा कि नहीं नहीं आ जाओ, अब आ जाओ, क्योंकि दिस इज द लाइक दिस इज अ टाइम फॉर द रेपुटेशन ऑफ द टीम, बिकॉज अगर अब बैकवर्ड अभी कर लिया तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। देन अगेन टीम मैनेजमेंट में यहाँ सबसे बड़ी चीज़ इम्पोर्टेंट यही होती है कि आपस में झगड़ा ना हो। I've seen this happening with me काफी time, because I am very short tempered वैसे, तो I get angry और like sort of कि अगर काम नहीं है तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ। But again, that is very important to control your anger and like have a proper management skill. For example, हमारा क्या हुआ था कि हमारा आइडिया कुछ और था पहले, and then it got converted to this idea that I already told you about. So वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि हालांकि we had ample amount of time thinking of an idea, because जब hackathon शुरू हुआ था it was around 9 a.m. and it got ended next day 5 p.m. So we had more than 24 hours, you can say, right? But again, you have to think not more than 24 hours. We had around 18 hours, you can say. So that is very important again, because you can see कि अगर उस टाइम पे आइडिया नहीं हो पाता मैनेज, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी
कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे कि क्या ये आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा, बट अगेन यू हैव टू लाइक थिंक, यू हैव टू कोलैबोरेट, यू हैव टू बिल्ड योर टीम. कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स आपस में लड़ो ना, कोलैबोरेट करके काम करो. टेक द अदर पॉइंट ऑफ व्यूज, बिकॉज अपना थोपते जाओगे तो अगेन यू वोंट सक्सीड. सो या दैट्स अ थिंग. ओके, सो लाइक मैंने बहुत लोगों से बात करके देखा, लाइक हैकेथॉन के टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है टीम को, टीममेट्स को। लाइक अगर एक टीममेट ने कह दिया लाइक दिस आइडिया इज़ गुड, बट अदर टीममेट्स को नहीं पसंद आता, सो लाइक उन्हें एक वैलिडेशन काइंड ऑफ थिंग चाहिए होता है कि ला हाँ कि ये आइडिया पैनल को पसंद आएगा। सो इस चीज़ का कुछ रिगार्डिंग हाउ डिड यू वर्क ऑन दिस? हाँ, तो मेरा तो I had a simple idea. This idea was given by me only to the team because, again, I'm already a software for this. You can say. तो मैंने बोला कि हाँ मैं I am the use case. So that's the only validation that you can have. So I can pretty much explain this idea very much clearly to the panelist. So they were very clear. Ki, for example, if you're building any product to the hackathon, any project, the first thing first you should think कि ये एक real world problem solve करता है कि नहीं करता. अगर करता है, by chance, for example, uh, like for example, you had faced the scarcity of water in your locality, तो उसके ऊपर तुम एक प्रोजेक्ट आइडिया बना सकते हो, बिकॉज अगेन यू फेस दैट प्रॉब्लम ऑलरेडी. मुझे पता था कि ये आइडिया हाँ चलेगा, बिकॉज अगेन एज आई सेड कि मेरे को पता था कि मैं एक वैलिडेशन हूँ, मेरे को पता था कि मैं एक ऑलरेडी सफरर हूँ ये प्रॉब्लम की. आई ऑलरेडी फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम while buying shoes, right? So I was pretty much clear ki how much business model, how much money can this idea can make, and how much social impact it could have. Uh, to be very honest, I just researched about all the things कि क्या क्या कितने types of disability अभी होते हैं इंडिया में. देन कितनों के पास एक्सेस होता है शूज खरीदने का, कितने कितने का खर्चा होता है प्रॉपर शूज पे एक साल में पूरा, राइट? सो पूरा स्टार्ट्स के साथ चल रही थी, तभी एक आइडिया लाइक यू कैन से अच्छा चला था. नहीं चलती होती मीन्स इवन लाइक मेरी अगर रिसर्च अच्छी से नहीं होती तो आई माइट हैव लूज्ड दिस hackathon. So your research should be very good. If you're not solving a real world problem, if you're not solving a problem that is like seen by you, make sure that your research is very perfect. You have your stats कि इतने लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई, इस चीज से प्रॉब्लम हुई, क्यों हुई, राइट, कब से है. तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं, लाइक या. सो लाइक हैकाथॉन से पहले कितना टाइम लाइक तुम लोगों ने डिवोट किया था, वीक, अ मंथ, कैसे हुआ था जब तुम्हारा प्रोजेक्ट बनेगा? तो हाँ, तो हमारी टीम एक वीक पहले बनी थी. एंड उसके पहले सौम्या ने मीन्स फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू दे दिया था, लाइक फर्स्ट इंटरव्यू बार फर्स्ट राउंड ऑफ हैकाथॉन दे दिया था. बट उसके बाद जो टीम बनी, एज ए सेड हमारा आइडिया डिफरेंट था. आवर आइडिया वाज अराउंड कि हाउ टू लाइक मेक लोकल वेंडर्स मेक प्रॉफिट्स, ऐसा कुछ आइडिया था. ऑन द डे ऑफ हैकाथॉन इट वाज चेंज्ड टू अ डिफरेंट आइडिया. सो यू यू कैन जस्ट इमेजिन कि हमने एक दिन में आइडिया सोचा, एक दिन में उसके स्टार्ट्स निकाले, एक दिन में पूरी रिसर्च करी, एक दिन में प्रॉपर वेंडर्स के कॉन्टैक्ट्स निकाले, एक दिन में कम्युनिटी सपोर्ट निकाला, एक दिन में टेस्टिमोनियल्स बनाए, एंड एक दिन में पीपीटी बनाई, यूएक्स यूआई करा, एंड देन प्रोडक्ट बना दिया. सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि वो सिर्फ एक दिन की मेहनत थी. So any can thing happen. When you have luck, you have your God ka grace and all that stuff. गुड गुड उन्नति। सो लाइक जब तुमने अपना प्रोडक्ट पैनलिस्ट को दिखाया, सो डिड दे एनीथिंग एडवाइज यू टू चेंज एनीथिंग, लाइक आस्क क्रॉस क्वेश्चन यू ऑन एनीथिंग?
नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं पैनलिस्ट के सामने गई थी for giving this idea, like presenting this idea, they surprisingly they didn't had any questions for us, because they were pretty satisfied with our pitch. मीन्स अपने पिच को इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बना लो कि उनके पास कोई क्वेश्चन ही ना रह जाए। थिंक कि वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिफोर प्रेजेंटिंग। वो ये पूछ सकते हैं कि कहाँ से आपने रिसर्च करी, कितने लोगों को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, राइट, कितने लोगों को ठीक हो सकते हैं, कितने टाइप्स ऑफ वेंडर्स ऑलरेडी हैं, राइट, कहाँ कहाँ पे वेंडर्स हैं, टेस्टिमोनियल्स आपने कहाँ से बनवाए, राइट, दिस दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस। कौन सा टेक्स्ट स्टैक्स यूज करें, उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ सकते ओके। सो प्रेजेंटेशन का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आई गेस हैकाथॉन में। सो प्रेजेंटेशन को अपना कैसे स्ट्रॉन्ग करें हैकाथॉन में, सो दैट यू गेट ब्राउनी पॉइंट्स एंड यू आर ऑन द वे टू विन द हैकाथॉन। हैं। या सो यहाँ पे पीपीटी जो हमने बनाई थी प्रेजेंटेशन, दैट वाज विजुअली लाइक अपीलिंग, राइट। उसमें एक चीज बताऊंगी कि नेवर एवर इंक्लूड अ लॉट ऑफ टेक्स्ट ऑन योर प्रेजेंटेशन, बिकॉज टेक्स्ट कोई नहीं पढ़ता। जो आपके पिक्चर्स होते हैं या जो आपके टेस्टिमोनियल्स होते हैं या आपके कोई डिजाइन आपने ऐड कर रखे हैं वेबसाइट के, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। मीन्स आप रिसर्च ऐड कर सकते हो उसमें, उसमें एक स्टैट्स ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, if 50% of people are physically disabled, so you can add that, right? Again, means you do not want to add a lot of content because of koi padta nahi, again I'm saying. So yeah, that's the thing, ओके। सो and that is लाइक, very important. ओके, सो तुमने जो प्रोडक्ट बनाया था उसका, सो यूजिंग विच टेक्नोलॉजी यू क्रिएटेड दैट? Yeah, so for the front end we use React.js, right? And for the back end we use Node to like use it. So we use both of the technologies and integrated that. Means Amazon just a UI tha. It was pretty seamless, and UI UX के लिए we use Figma again for designing purpose. And we had a login page. We had then a dashboard wherein all the products were listed. Then we had also an option for sign in with the buyer or sign in as a customer. And then we had a payment gateway, a proper dashboard, checkout page. And then we had the last page, thank you for buying with. So, yeah. So, any like new recent technologies which you got to know in the hackathon? या सो यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि नेवर एवर एक्सप्लोर अ न्यू टेक्नोलॉजी इन द हैकाथन। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम होता है। वी हैव ओनली 24 आवर्स या 48 आवर्स का हैकाथन। उसमें हमें प्रोडक्ट पूरा स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ता है। अब उसमें अगर आप नई टेक्नोलॉजी पढ़ने जाओगे तो उसमें आपका एक दिन तो ऐसे वेस्ट हो गया, राइट। सो नेवर एवर एक्सप्लोर अ न्यू टेक्नोलॉजी। कभी भी नई टेक्नोलॉजी मत एक्सप्लोर करो, बिकॉज अगेन टाइम बहुत कम होता है। दैट इज द ओनली रीजन। वहां पे तुम अगर मान लो कि तुमने ब्लॉकचेन पे कोई चीज बनानी है एंड यू डू नॉट नो हाउ टू इंटीग्रेट ब्लॉकचेन ऑन अ नॉर्मल प्रोजेक्ट, मीन्स इसको डिसेंट्रलाइज कैसे करें, ऑन चेन कैसे करें। सो अगर आप उसको पढ़ने जाओगे तो ऑलरेडी वन डे हैज बीन वेस्टेड, बिकॉज you will read the tutorials, you will read on the documentation. That is very time consuming. So I won't recommend कि नई technology पढ़ो. Whichever technology you are comfortable with. You are comfortable with React, you can use that. If you are comfortable with Django for the backend, you can use that. You, like, if you know MLAI, you can still create a product with that only. Okay.
So, Unati, as you mentioned, you are in fourth year, right? So, what in the last three and a half years almost, what all the skills you did which helped you in the hackathon? Yeah. So basically, um, जब मैं अपने second year में थी, I had got an experience of contributing to open source. Like, open source is, you can say, has changed my world, and by God grace, it has led me to crack Zomato as well. Like, I am the founder of my own community, Codex Script. It's an open source community and contributed to 45 of the repositories till now, which include Meshri, and Level 5 is a community in which it's a service mesh. Again, I have contributed to Public Lab a bit. I have contributed to Open Horizon, which was under LFX Linux Foundation mentorship. So again, I was an MLH fellow wherein I learned about React.js API building and Open API, Open Weather API. So वहाँ से मेरे को फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज का पता चला कि हाउ कैन यू बिल्ड प्रोजेक्ट्स यूजिंग फ्रंट एंड। देन मैंने काफ़ी सारे ओपन सोर्स, जैसे मैं बता रही थी, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करा। वहाँ से मुझे पता चला कि काफ़ी सारे क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज भी होती हैं। देन देर आर क्लाउड टेक्नोलॉजीज अलग से, राइट? जैसे तो वहाँ पे कंट्रीब्यूट करा। देन मैं एलएफएक्स मेंटी भी रह चुकी हूँ। सो वहाँ पे मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला था जहाँ पे दैट यूजेस 13 टेक्नोलॉजीज ऑल टुगेदर। सो मैंने वो 13 टेक्नोलॉजीज सिर्फ 3 मंथ्स में सीखी, विच इंक्लूड YAML, ट्रेविस, मार्कडाउन। मार्कडाउन इज़ वेरी इजी, उसमें तो कुछ नहीं है। रिएक्ट इज कॉमन। देन मेक, राइट? Then GitHub Actions, how to use them, CI/CD tools, how to create pipelines, right? So वो चीज़ें सीखी। Then I shifted to, as बोल रही हूँ मैं, जैसे मैंने इंटर्नशिप करी काफ़ी जगह। आई वॉज अ डेवरल इंटर्न एट Keploy. इट्स अ नो कोड एपीआई टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। तो मुझे वहाँ से एपीआई टेस्टिंग के बारे में पता चला कि हाउ यू कैन डू द एपीआई टेस्टिंग। मैनुअल होती है, फिर यूनिट टेस्टिंग होती है, राइट? देन टेस्ट केसेस लिखे बहुत सारे, अगेन एंड गो। आफ्टर दैट मैं डेवलपर इंटर्न रह चुकी हूँ जेन ड्यूटी में। इट्स एस आर ई बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे मुझे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता चला कि how to write the API documentation, how to make write SDKs in different technology, different languages. So मैंने 4 SDKs पे वर्क कर रखा है: Python, Go, Ruby, and normal make. So yeah, that's the thing. And after that, Zomato से पहले there was asset mental. Then मेरे को blockchain के बारे में पता चला थोड़ा। So I work already with blockchain, smart contracts build करे, then उसको deploy करा। Then I'd also work with Tezos ecosystem, Ethereum, asset mental. It's also a layer one, so I'd also work with them, how to make NFTs, how to mint them, how to list them, and how to create a marketplace. Scala पे वर्क कर रखा है मैंने। देन नॉर्मल डीएसए के लिए जावा यूज करती थी फर्स्ट ईयर में। लाइक डीएसए इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ मी, लाइक मेरे को डीएसए अच्छे से नहीं आता, बट still I'm very confident with other technologies and tech stacks. And that's how I think I had performed great in Zomato due to that only. And right now also I'm working on accessibility for the Zomato applications, how to make more uh, people accessible, how to make Zomato more accessible for people who are differently abled, like for more contrast, big fonts, flashlights. How can they actually use text to speech is one thing, right? So yeah, that's
And Yeah, currently I'm working with learning Go. So yeah, that's again a a new new language for me in Zomato. yeah, good to hear this long list. And the last, I want to like ask you like any tip or a mantra which you want to give to our audience that helped you to crack the Zomato. Yeah, so basically, I think that Zomato was, देखो hard work तो सबका होता है. Hard work is the one thing that can get you a lot of things on your plate. But again, there is a luck factor too, right? So always believe in God. Ki there is something for you, which is like which would be there, right? Waiting for you, and then you have to वर्क अपॉन योर टेक्सटाइल्स टेक्नोलॉजीज. ये 4 साल होते हैं यार पूरे मेहनत करने के लिए. एंड इन 4 सालों में मेहनत कर लो तो आगे के लाइक लाइफ सेटल हो जाती है आई वुड से. एंड स्टार्ट से ही लैंग्वेजेस पे पकड़ रखो. इफ आई कुड बी डीएसए डू डीएसए. इफ आई नॉट कुड बी डीएसए leave that you can do development and still crack a great MNC. Like hackathon based hiring challenges होते हैं already. So you can do that. If I can do, you can also do. Okay, so hackathon hiring challenges as you mentioned, so कोई और कंपनीज भी ऐसे हैकाथॉन के थ्रू हायरिंग करती हैं उसका कोई? Yeah. So, like a lot of companies do hire on basis of your development skills. There is PhonePe, which has. Then there is a Publish Sapient, which is a great company again, which has on hackathon based. Again, there is Google. उनका एक प्रोग्राम है गूगल गर्ल्स हैकाथॉन. वो गर्ल्स को लाइक हायरिंग करते हैं to that hackathon. It's for second, third years, I guess. So they can take part. Again, there is by numerous number of companies. जैसे Zomato itself, then Swiggy do hire through hackathons as well. Like normal बहुत सारी companies हैं जो करती हैं. I can still not remember, but हाँ बहुत सारी companies होती हैं and you can still find that on Unstock. Okay, so Unstock Hackaroth, then Dare to Compete are some of the like great platforms for hackathons and hiring based challenges. And also Hero, Tata, they do are on like hackathon based or development based. okay, Unnati, it was nice talking to you and thank you for taking out time from your busy schedule for this, and hoping Thank to you so connect much, with you Mayank. again in future for such video. Thank you so much, Mayank, for having me. And hope your channel also get a lot of subscribers. And wish you all the luck. And thank you so much for having me here. Thank you, and I wish you all the best for your further journey. And Thank you so much. it was nice interacting with you, Unnati. Bye. Bye. So if you like the video, then do hit the like button and also share this video among your friends and college groups. Also, don't forget to subscribe to the YouTube channel for more such videos. You can also follow me on Instagram and LinkedIn. Do men- do find the links in the description box below. Till then, bye. See you in the next video.